Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. And I'm Ruchi Sharma. Bitcoin, the most popular virtual digital asset or cryptocurrency, did manage to breach the $25,000 mark briefly during the week as bulls made a roaring comeback supported by favourable data points that underpinned the strength of US economy. Although lofty consumer price index number remains a matter of concern, but investors initially ignored its influencing factor. They remained confident of risk-reward strength in favor of bull camp. However, Federal Reserve official reiterating hawkish stance in response to sturdy inflation trends as well as crypto industry woes caused the pullback in prices. Bitcoin, the largest digital asset by market capitalization, was recently trading at about $23,618, down 4.8% over the past 24 hours and well off its high earlier in the day above $25,100. Ether followed a similar path to BTC, rising well above $1,700 for the second consecutive day before retreating. The second largest crypto by market capitalization was recently changing hands at about $1,650. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने गुरुवार को असफल टेरा यूएसडी स्टेबल कॉइन के पीछे की कंपनी टेराफॉर्म लैब्स और इसके को-फाउंडर डोगकॉइन पर मुकदमा दायर किया। एसईसी ने आरोप लगाया कि टेराफॉर्म और कॉइन ने कई मुद्दों पर इन्वेस्टर्स को गुमराह किया, जिसमें भुगतान के लिए टेरा यूएसडी का इस्तेमाल करना शामिल था। और शिकायत के मुताबिक यील्ड बियरिंग एंकर प्रोटोकॉल और लूना टोकन दोनों को क्रिप्टो एसेट सिक्योरिटीज कहा। एसईसी टेराफॉर्म और कॉइन पर फ्रॉड, सेलिंग अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज, सेलिंग अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी बेस्ड स्वैप्स और दूसरे रिलेटेड क्लेम्स को बेचने का आरोप लगाया गया है। Moving on, decentralized finance protocol Platypus Finance suffered a flash loan attack on Thursday, blockchain security firm Certic tweeted. The potential loss in the exploit is $8.5 million. Platypus USD, the protocol stablecoin, lost its price peg to $1 as a result of exploit, falling to 48 cents from its $1 anchor, according to CoinGecko. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जापान के सेंट्रल बैंक ने शुक्रवार को घोषणा की कि डिजिटल येन के इस्तेमाल का परीक्षण करने के लिए एक पायलट प्रोग्राम अप्रैल में शुरू होगा। इस घोषणा के साथ जापान सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने में फ्रंट रनर चाइना से आगे निकलने का प्रयास करने वाले देशों की बढ़ती सूची में शामिल हो गया है। वाइडली एक्सपेक्टेड मूव 2 सालों के एक्सपेरिमेंट्स के बाद बैंक ऑफ जापान सीबीडीसी जारी करने का निर्णय लेने के लिए कंडक्ट कर रहा है। ये एकेडमिक काजुओ ओएडा के लिए बीओजे के लीडरशिप ट्रांजिशन से भी आगे आता है, जिसके इंक्यूबेट हारुहिको कुरोडा के सफल होने की उम्मीद है। कुरोडा का दूसरा 5 साल का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो जाएगा। Moving on, Sony Network Communications, a business division of the Sony Group, has teamed up with multi-chain smart contract network A-Star Network to launch a Web3 incubation program for projects that focus on utility of non-fungible tokens and decentralized autonomous organizations. According to a press release, the Web3 incubation program will be organized by Singapore-based Startale Labs, a company founded by A-Star Network CEO Sota Watanabe, and will run from mid-March to mid-June of this year. Applications for the program open on February 17 and close on March 6. बढ़ते हैं आगे। फेडरल जज ने प्रभावी रूप से डिफंक्ट क्रिप्टो माइनिंग सर्विस फर्म कंप्यूट नॉर्थ के लिए फाइनल रीऑर्गेनाइजेशन प्लान को मंजूरी दे दी, जो नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी, जो फर्म को पहले जैसे बनाने के लिए ट्रैक पर स्थापित कर रही थी। कंप्यूट नॉर्थ ने सितंबर में बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन के लिए दायर किया क्योंकि ये अपने डेट ऑब्लिगेशंस को पूरा करने में असमर्थ थी। गुरुवार को सुनवाई में कंप्यूट नॉर्थ के अटॉर्नी ने कहा कि माइनिंग फर्म ने 13 एसेट की सेल्स बंद कर दी है, जिसमें से 4 प्रमुख हैं जिन्होंने अपने सभी सिक्योर डेट को संतुष्ट किया है, जो $250 मिलियन थे। Moving on, Web3 gaming studio Unagi secured $5 million in a seed round led by Sisu Game Ventures. The raise, which closed at the start of this year, comes only months after the startup secured $4.2 million from Binance Labs. The total amount raised by Unagi is $12.3 million. Investors in the seed round also include S-Fermion, Signum Capital and 2B Ventures, the company said in a statement. The new raise
double the startup's valuation, the company said without disclosing it. With the new funds, Unagi is looking to almost double its team size from 25 people to 40, secure new partnerships, and increase its marketing efforts. That's all for now. And now let's move on to our special segment, Weekly Wrap. Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. And I am Ruchi Sharma. Let's start with the top story for today. Bitcoin, the most popular virtual digital asset or cryptocurrency, did manage to breach $25,000 mark briefly during the week as bulls made a roaring comeback supported by favourable data points underpinning the strength of US economy. Although lofty consumer price index number remains a matter of concern, but investors initially ignored its influencing factor. However, Federal Reserve officials reiterating hawkish stance in response to sturdy inflation prints as well as crypto industry woes caused the pullback in prices. Bitcoin, the largest digital asset by market capitalization, was recently trading at about $23,618, down 4.8% over the past 24 hours and well off its high earlier in the day above $25,100. That mark represented BTC's first soaring above $25,000 since August, reflecting rising optimism about inflation and the economy. Ether followed a similar path to BTC, rising well above $1,700 for the second consecutive day before retreating. The second largest crypto by market capitalization was recently changing hands at about $1,650. The global market cap has decreased by 3.57% in the last 24 hours and is now at $1.08 trillion. तो रुचि यहाँ पे इस हफ्ते की शुरुआत में जो फेवरेबल डेटा पॉइंट्स आए उसके बाद में $25,000 के आसपास बिटकॉइन ने ट्रेड किया, लेकिन उसके बाद जो CPI नंबर्स हैं वो थोड़ा मैटर ऑफ कंसर्न बने हुए हैं और इसके साथ साथ फेडरल रिजर्व ऑफिशियल का जो हॉकिश स्टांस है तो उसके बाद भी थोड़ी मार्केट में गिरावट देखी गई। और जैसा तुम देखते हैं जब भी बिटकॉइन के हिसाब से बाकी कॉइन्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं, तो जब से बिटकॉइन में अगर हम गिरावट देखते हैं तो बाकी सारे कॉइन्स भी जो है उसको फॉलो करते हैं, उनमें भी गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन होप करते हैं कि आगे जो है हम शायद थोड़ी तेजी या एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देखें मार्केट में ओवरऑल। So moving on, G20 major economies are investigating whether they can collectively regulate cryptocurrencies, according to Finance Minister Nirmala Sitharaman on 11th Feb. Given the sophisticated technologies involved with these virtual assets, countries must debate whether a particular regulation is necessary, according to Sitharaman, whose country is this year's G20 president. We are talking to all nations that if it requires regulation, then one country alone cannot do anything. We are talking with all nations if we can make some standard operating procedure which is followed by everyone to make a regulatory framework and if it can be effective, and Sitharaman told reporters after meeting the central bank's directors in New Delhi. तो इस साल जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो इंडिया कर रही है, ये हर कोई जानता है, और जो ये G20 मीट होगा वो सितंबर में होगा, लेकिन उससे पहले बहुत से इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए अभी इसी महीने की 24-25 तारीख को बेंगलुरु में जो है वो एक मीटिंग होने वाली है। और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने हमेशा से ये कहा, जैसे कि हम भी कवर कर रहे हैं इस पूरी इंडस्ट्री को 1-1.5 साल हो चुका है, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि क्रिप्टो करेंसी को जो है इस पूरी मार्केट को रेगुलेट करना चाहती हैं। और वो भी कहते हैं कि ये काम अकेला इंडिया नहीं कर सकता, वो चाहती है कि एक ग्लोबल स्टैंडर्ड हो जिसे हर कोई फॉलो करे, ताकि हर कंट्री में एक आई थिंक एक सिमिलर स्टैंडर्ड्स हो इस करेंसी को लेकर। तो अभी भी यही बात चल रही है कि हो सकता है जो भी मीटिंग होने वाली है उसमें इंडिया को किस तरह के रेगुलेशंस लगता है कि आने चाहिए, शायद उस पर बातचीत होगी, ताकि आगे उसका प्रस्ताव जो है वो G20 मीट में रखा जाए और फिर एक ग्लोबल स्टैंडर्ड पर आई थिंक सबकी सहमति बने और फिर उसको फॉलो किया जाए। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि बैंगलोर में ये मीट होने वाली है और सभी इन्वेस्टर्स की नज़रें अब इस मीट पे रहने वाली हैं कि क्या रेगुलेशंस आने वाले हैं, क्योंकि देखा जाए तो इससे पहले जब बजट 2023 की अनाउंसमेंट हुई तो उसमें सभी इन्वेस्टर्स या सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ना कुछ तो इनके लिए आएगा, लेकिन वहाँ पे निराश हुए सब, जी बिल्कुल निराश हुए। तो अब जब जो सबकी नजरें हैं वो G20 प्रेसिडेंसी पे ही है। Moving on, the Polygon blockchain has spawned yet another major partnership in India, this time for the benefit of country's moviegoers. Shimaru Entertainment and Polygon have collaborated to launch an NFT marketplace
themed after India's Bollywood film industry. Shimaru made the announcement on Thursday, February 9. The entertainment and media company has chosen the name Whatsy.io for its upcoming NFT marketplace, which will launch in the coming days. Shimaru has dabbled in the Web3 arena in recent times. For example, last year it launched a Metaverse cinema experience in Decentraland. तो रुचि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शिमारू अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि Web3 और कैसे इससे लेके जो इनके जितने भी यूज़र्स हैं और जितने भी लोग शिमारू को फॉलो करते हैं, तो बहुत मीडिया कंपनी है एक अच्छी, तो इसके बिल्कुल, तो इसके साथ साथ शायद और जो कंपनीज हैं वो भी इसमें आना शुरू करेंगे। तो हमने पिछले साल देखा कि डिसेंट्रलैंड पे इन्होंने अपना एक वर्चुअल मूवी थिएटर लॉन्च किया, जिसमें काफ़ी अच्छी फिल्म्स जैसे DDLJ या पुरानी जितनी भी एक अच्छी सीरीज थी फिल्म्स की, तो वह सभी प्ले की। और अब इसके साथ साथ इन्होंने अब एक और ये पार्टनरशिप जो की है पॉलीगॉन के साथ NFTs को लेकर। ये NFTs बहुत दिलचस्प होने वाली, स्पेशली जो लोग फिल्मी है जैसे मैं, कि बहुत सारे क्योंकि आइकॉनिक कैरेक्टर्स होंगे, फिल्म सॉन्ग्स होंगे, फिल्म सीन्स होंगे, तो ये एक अच्छी पहल है। और जैसे आपने कहा ना कि ये इंडिया में शिमारू ने ये पहल की है, और कुछ फिल्में भी ऐसे इससे पहले उनकी प्रोमोज वगैरह मेटावर्स में लॉन्च हुए। लेकिन अगर हम बात करें हॉलीवुड की, तो बड़े बड़े यूनिवर्सल स्टूडियोज एंड बड़े बड़े स्टूडियोज ऑलरेडी मेटावर्स में एंटर कर चुके हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। कब ये शिमारू ने भी उसे फॉलो किया, पूजा फिल्म से ऑलरेडी मेटावर्स में है ही। बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे। The wormhole attack was the third largest crypto hack in 2022, resulting from an exploit of wormhole's token bridge in February 2022. Around $321 million of wrapped ETH was stolen. According to blockchain security firm PeckShield, the hackers' associated wallet has become active once again, moving $46 million worth of crypto assets. This was made up of around 24,400 Lido Finance wrapped Ethereum staking token worth approximately $41.4 million and 3,000 Rocket Pool Ethereum staking token worth about $5 million, which was moved to MakerDAO. तो ये बहुत बड़ा एक अटैक था, वर्महोल अटैक, जो कि 2022 का, जैसे कि हमने बताया, उसका थर्ड सबसे बड़ा अटैक था। अब लेकिन जो घबराने की बात है या फिर थोड़ा सा सचेत होने की बात है वो ये है कि अब जो है वही हैकर वापस हरकत में आ गया है, एक्टिव हो गया। $46 मिलियन के जो है क्रिप्टो उसने वापस मूव किए हैं, और टोर्नेडो कैश के थ्रू उसने इसे मूव किया है। बेसिकली टोर्नेडो कैश जो है वो एक इस तरह का, मैं कहूँगी कि एक सॉफ्टवेयर कह सकते हैं आप, या जो भी है, इसके थ्रू आप अपनी ट्रांजैक्शंस को छुपा देते हैं। अगर कुछ मूवमेंट आपको किसी एक वॉलेट से किसी और वॉलेट में आपको कुछ मूवमेंट करनी है, लेकिन आप नहीं चाहते कि लोगों को पता चले, तो टोर्नेडो कैश क्या है, उसको मिक्स कर देता है सभी करेंसीज को। और US में तो इसे सैंक्शन भी किया हुआ है। US में आप टोर्नेडो कैश यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिलहाल इस टोर्नेडो कैश के यूज़ करके लीडो और जो हमने एक और कंपनी का यहाँ पे नाम लिया, उन दोनों स्टेकिंग पूल्स को यूज़ करते हुए इन्होंने जो है वो ट्रांजैक्शन की है और उस करेंसी को जो है एक तरह से छुपा दिया टोर्नेडो कैश के थ्रू। जी, तो वर्म होल अटैक भी हमने पहले भी कवर किया है, और जैसे कि आपने बताया कि थर्ड लार्जेस्ट अटैक ये रहा 2022 का। तो अब $46 मिलियन यहाँ पे क्रिप्टो एसेट्स इसने मूव किए हैं, लेकिन इसके बाद और भी ये नंबर आगे बढ़ सकता है, विच इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि काफ़ी हैक्स, जैसे अक्टूबर में हैकटोबर था, तो काफ़ी ज़्यादा हैक्स भी हो रहे हैं। बिल्कुल। Moving on, the New York Department of Financial Services ordered crypto infrastructure firm Paxos to stop issuing the stablecoin Binance USD, a Binance spokesperson told. Paxos has informed that they have been directed to cease minting new BUSD by the New York Department of Financial Services, they said. BUSD is a stablecoin wholly owned and managed by Paxos. As a result, BUSD market cap will only decrease over time. Paxos will continue to service the product, manage redemptions, and will follow up with additional information as required. The decision comes after CoinDesk reported on 10th of February that the NYDFS is looking into Paxos. Paxos has announced that it will stop issuing new BUSD stablecoins on February 21st. The company stated that it will honor BUSD redemptions at least until February 2024. तो 21 फरवरी से पैक्सोस यहाँ पे BUSD को प्रोड्यूस करना बंद करने वाला है, क्योंकि ये डिसीजन जो आया है न्यूयॉर्क अथॉरिटीज़ की तरफ से। तो एक तरह से देखा जाए तो जो SEC है वो कहा जा रहा है कि बाइनेंस के पीछे थोड़ा है, नजर है बाइनेंस पे, बाइनेंस पे।
तो इसीलिए आई थिंक बहुत सी एक्सचेंजेस हैं वो BNB टोकन भी नहीं ले रही हैं, वो अपने एक्सचेंज पे उसको लिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं SEC इसको सिक्योरिटी घोषित ना कर दे, और क्योंकि BUSD डीपेग भी हो चुका है, और कहते हैं ना एक one's loss is other person's gain। तो जब फायदा, हाँ, जब BUSD एक अच्छा स्टेबल कॉइन जो था जिससे वो गिरा, तो उसका फायदा टेथर को मिला, जो नेक्स्ट स्टेबल कॉइन अच्छा बड़ा स्टेबल कॉइन है। और अक्सर जो है चैनपेंग जाओ कुछ ना कुछ अतरंगी सा बयान दे देते हैं, तो इस बार उन्होंने ये कहा है कि हो सकता है फ्यूचर में डॉलर की जरूरत ही ना पड़े किसी भी स्टेबल कॉइन को पेग करने के लिए। तो लेट्स सी अगर वो दिन आता है या नहीं आता है। Moving on, the US Securities and Exchange Commission's case against FTX founder Sam Bankman-Fried will be put on hold until related charges brought by the Department of Justice are dealt with, a US judge said in a Feb 13th ruling. US prosecutors last week said a pause would save time and resources, as the DOJ case against Bankman-Fried will likely influence overlapping civil cases. The SEC said Bankman-Fried used customer funds for his lavish lifestyle. On Tuesday, another civil case brought against the disgraced founder by the US Commodity Futures Trading Commission was also delayed until after the trial. In December, Bankman-Fried was arrested following the collapse of FTX and has pleaded not guilty to criminal charges brought against him by the DOJ, which include wire fraud and money laundering. तो यहाँ पर सैम बैंकमैन-फ्रीड पर बहुत सारे केसेस हैं। इनफैक्ट SEC और CFTC ने तो अपने केसेस को भी होल्ड पर रख दिया। उन्होंने कहा है कि जब तक ये सारे क्रिमिनल केसेस निपट नहीं जाते वो अपने केसेस शुरू नहीं करेंगे। और उसके साथ साथ FTX ने सबीना भेज दिया है सैम बैंकमैन-फ्रीड को, कैरोलिना एलिसन को, गैरी वांग को, जी, इन सबको कि ये भी सब अपने जो है पूरे पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोड्यूस करें। जी, और $250 मिलियन की यहाँ पे बात हुई, लेकिन देखा जाए तो एक तरह से जो ये खतरा है कि 250 मिलियन की जो उनकी बेल है वो कैंसिल भी हो सकती है, वो कैंसिल भी हो सकती है, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक तरह से खतरा अभी भी सैम बैंकमैन-फ्रीड पे बना ही हुआ है, और देखा जाए कितने समय से ये जो चला आ रहा है, हम पूरी कवर इसे कर रहे हैं। Moving on, despite opposition from Bitcoin purists, ordinals, the Bitcoin blockchain's NFT-like project shows no signs of slowing down, with over 76,400 inscriptions created to date. According to Dune data, the number of ordinals peaked on February 9, 2023, with over 20,800 inscriptions for the day. Ordinals, which was launched last month, is the latest project aiming to integrate NFTs into the Bitcoin ecosystem. Ordinals differ from previous projects in that the digital assets are inscribed directly onto Satoshis, Bitcoin's lowest denomination, without the use of a sidechain or token. तो आप यहाँ पे NFTs कवर करते हैं, और आपसे अच्छा कौन इसे जान सकता है। तो विशाखा, हमेशा से इथेरियम ने ही जो है वो NFTs डेवलप की, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलप किए, और NFTs के लिए जो एक EVM कंपैटिबल एक ब्लॉकचेन को होना चाहिए था, वो सब एक कंप्लीट पैकेज इथेरियम, और इसीलिए 90% जो NFTs हैं वो इथेरियम पे ही है। बिटकॉइन पहली ब्लॉकचेन होने के बावजूद भी उस पर NFTs नहीं थी। अब रिसेंटली जो है लास्ट मंथ से ही बिटकॉइन इकोसिस्टम ने जो है NFTs एक्सेप्ट की हैं, और ऑर्डिनल्स NFTs भी उसे कहा जाता है। अच्छी बात यह है कि शुरुआत होते ही अच्छे खासे हम नंबर्स देख रहे हैं पीक पे इंस्क्रिप्शंस के। और एक अलग बात जो बिटकॉइन NFTs की वो है कि इनकी ये जो वर्चुअल एसेट्स होते हैं, दे आर इंस्क्राइब्ड डायरेक्टली इनटू सातोशी, जिसके हमने कहा भी, और सातोशी जो है वो सबसे छोटा डिनोमिनेशन है बिटकॉइन का। हम चाहते हैं कि बिटकॉइन के बहुत छोटे छोटे डिनोमिनेशन में आप उसको तोड़ सकते हैं। तो इसके लिए इन NFTs के लिए किसी साइड चेन की या फिर किसी टोकन की ज़रूरत नहीं होती है, और इतना अच्छा ट्रैक्शन इसको मिल रहा है कि पिछले 2 हफ्ते में जो है जो गैस फीस है बिटकॉइन चेन पर, ब्लॉकचेन पर, वो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। और इतना ही नहीं, क्रिप्टो पंक्स और BAYC जो जैसी ब्लू चिप्स जो NFTs हैं उनके क्लोन तक आ चुके हैं बिटकॉइन NFT इकोसिस्टम पे। तो इट्स डूइंग वेरी वेल। लेट्स सी कि क्या आने वाले वक्त में बिटकॉइन जो है वो लीड करेगा और इथेरियम को पीछे छोड़ देगा या नहीं। So moving on, today China Telecom and Conflux Network announced a partnership to bring a blockchain SIM card to market. The entry-level Web3 product will be the largest blockchain hardware product ever seen globally, involving the most user and applications. China Telecom will launch the first BSIM pilot program in Hong Kong later this year. This will likely be followed by pilots in key mainland China locations such as Shanghai. BSIM will dramatically lower the barrier to entry to Web3 for China Telecom's 390 plus million mobile phone subscribers, while making transactions faster and more secure. By making telecom users' personal digital assets more secure, the goal is to make mobile phones more secure. The BSIM card integrates Conflux
tree graph, dual proof of stake and proof of work technology, enabling the highest system performance for any blockchain in the world. It uses the hardware security advantages of SIM cards to protect users' private keys, which is a secure and convenient Web3 entry solution. तो यहाँ पर चाइना एक बार फिर से लीड करने वाला है ब्लॉकचेन। सोचिए ब्लॉकचेन सिम कार्ड वो लेकर आने वाले हैं, और जैसे कि हम कह रहे हैं ना कि अभी हम लोग तो वेब3 में जाने की बात करें, इन ब्लॉकचेन सिम के साथ एक्चुअली में चाइना वेब3 में पहुंच जाएगा, बहुत आगे, काफ़ी आगे बाकी देशों से पहुंच जाएगा। बिल्कुल। और आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे 290 प्लस मिलियन प्लस इनके जो मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं वो हैं, और यही इतनी अच्छी शुरुआत के बाद जैसे कि आपने कहा कि वेब3 में इनका जो है अच्छा कदम है, तो आई होप कि और जो कंट्रीज़ हैं वो भी ये फॉलो करें। बिल्कुल। Moving on, according to a 9th February report by The Information, Microsoft has ended a project that aimed to encourage the use of Metaverse in industrial environments just 4 months after it was formed. According to the report, the team's 100 members have been laid off, citing a person with direct knowledge of the situation. According to source, the company prefers to prioritize short-term projects over those that require more time to generate meaningful revenue. The layoffs are part of Microsoft's larger plan to lay off 10,000 employees, or about 4.5% of its workforce, announced last month. तो जनवरी में हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट ने 10,000 लोगों को निकाल दिया, और इतने बड़े ले ऑफ के बाद जितनी भी ये कंपनीज़ हैं जो मेटावर्स में विच आर एम्ब्रेसिंग मेटावर्स, चाहे मेटा हो, मेटा ने भी अभी कुछ टाइम पहले 11,000 लोगों को निकाला, और अब माइक्रोसॉफ्ट, तो मेटा, माइक्रोसॉफ्ट या एनवीडिया की हम बात करें तो सभी साथ में मिलकर जितना ये मेटावर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, वेब3 की तरफ, तो सभी चाहते हैं कि रेवेन्यू जनरेट हो, तो वो ये वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स के थ्रू चाहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने इस ले ऑफ के बाद फिर से ये फरवरी में, अभी इसी महीने में कुछ 100 जो इनकी मेटावर्स डेवलपमेंट टीम की जो कोर टीम मेंबर्स थे उसमें से 100 लोगों को निकाल दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है ये वेब3 इंडस्ट्री के लिए, या जो मेटावर्स में जितने भी की प्लेयर्स हैं कि क्यों ऐसा हुआ। तो ये मैं आपको बता दूं यहाँ पे व्यूअर्स को भी कि ये माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एआई की तरफ अपना जो है ये जो ज़्यादा बटाना चाहता है। बिल्कुल, और वो ज़्यादा एआई पे फोकस करना चाहता है, तो इस वजह से जो है ये ऐसा किया गया। इनफैक्ट बजट में भी, यूनियन बजट में भी निर्मला सीतारमन ने भी, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने भी कहा था कि एआई के 3 नए इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो सेटअप किए जाएंगे, तो एआई पर खासा ध्यान सभी का है, एंड आई थिंक दैट इज द फ्यूचर टेक्नोलॉजी, तो उस पर ध्यान होना भी चाहिए। Well, that's all in Weekly Wrap today. This is me, Ruchi Sharma, signing off. And this is me, Vishakha Thakur, signing off. Keep watching 3.0 TV for more such updates.